हेलो गाइस, दिस इज मयंक आर्ट्स। आज की इस वीडियो में केदारनाथ टेम्पल को कलर करने वाला हूँ। टेम्पल में कलर करने के लिए मैं अल्कोहल मार्कर फॉर बेस लेयर और कलर पेंसिल यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास मार्कर्स नहीं है तो आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हो, पर वाटर कलर से लेयरिंग जो भी करना चाहे वो कलर सूख जाए, अदरवाइज ड्राइंग भी खराब हो सकती है। ओके, टेम्पल में जो भी लाइट कलर है वो अगर आपको मार्कर या वाटर कलर में नहीं मिल रहा है तो कोई सा भी उससे मिलता जुलता कलर से बेस लेयर डाल दो। और जहाँ पे डार्क या शैडो है वहाँ पे लेयरिंग कर दो। इसी प्रोसेस से पूरे मंदिर में बेस लेयर डाल देनी है।
उसके बाद गाइस हमें कलर पेंसिल से डिटेलिंग करनी है। और गैस ब्रिक्स में थोड़ी और लाइट वैल्यू को डालने के लिए मैं उस पर वाइट कलर चला रहा हूँ। और गैस कोई जल्दबाजी मत करना, नहीं तो जो ड्राइंग है वो ख़राब हो सकती है। एकदम आराम आराम से जितना टाइम दिया जाए उतना टाइम देना अपनी ड्राइंग को। जो ड्राइंग है उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। That's it for our Kadarnath temple coloring tutorial. I hope guys you enjoyed this process and found it helpful. Let me know if you have any question. Please ask me on the comment. Thanks for watching guys. Bye.